I'm Areej Tahir, and today we'll be talking about the problems that students usually have when they're preparing for entry test, and we'll be talking to one of the students and then we'll get to the solution. So let's get to it. Hi guys, my name is Haiqa. I am currently in Mass Communications studying at SSH. I'm from batch 2020. The two major problems that I personally faced while attempting NET, I've had two attempts and मतलब मेरा first में मुझे काफ़ी अच्छा idea हो गया था कि what my shortcomings are. और फर्स्ट थिंग मुझे जब मतलब इस्लामाबाद कैंपस पे लेके गए, द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस वाज आई डिडंट नो हाउ टू मैनेज माई टाइम, बिकॉज एक तो जब आप रिटन में कर रहे हो तो इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन अ पीसी. तो मतलब लाइक व्हेन आई सॉ कि मतलब लाइक ओ एटलीस्ट मुझे सर्कल्स वगैरह फिल नहीं करने, तो आई गॉट अ लिटिल ईजी. एंड इसकी वजह से मैं फिर मतलब काफ़ी कैजुअली कर रही थी कि हो जाएगा, बट एंड पे बाकी डजेंट मैटर बिकॉज टाइम निकल रहा होता है. तो मुझे इस चीज़ का इशू है. फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं मतलब लाइक सर्टेन मिनट्स या सेकंड्स, एग्जैक्टली 45 सेकंड्स पर उस पर दूंगी अगर वो रीड करके हो सकते हैं वो वाले. नहीं तो इफ़ आई कांट अटेम्प्ट देम एट फर्स्ट ग्लांस, मैं एक और दफ़ा पढ़ूँगी. अगर नहीं होता, इफ़ आई फील लाइक आई गेट स्टक ऑन दिस, देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ताकि मैं उसको आई कम बैक एंड चेक दैट अगेन. बिकॉज अगर आप एक ही क्वेश्चन पे काफ़ी देर अटके रहो तो इट्स मोस्ट लाइकली दैट यू आर गोना वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट, एंड ऑनेस्टली एनी टीम में आप यू कांट अफोर्ड दैट. इसके अलावा मुझे सेक्शन प्रायोरिटी का नहीं समझ आता कि मैं किस सेक्शन को पहले प्रायोरिटाइज करूँ, कि मैं पहले मैथ करूँ, पहले मैं इंग्लिश करूँ, क्या पहले मैं इंटेलिजेंस करूँ. तो आई पर्सनली, बिकॉज माई स्ट्रेंथ इज़ इंग्लिश, तो आई वाज लाइक कि बिकॉज ये ईजी है, आई कैन डू दैट एट द एंड. तो और मैथ्स में थोड़ा क्योंकि आपको सोल्यूशंस वगैरह निकालने होते हैं, स्टफ लाइक दैट, इवन इफ देयर लाइक शॉर्ट सोल्यूशंस, आपके पास ट्रिक्स वगैरह होती हैं, यू नीड टू डू दोज ऑन पेपर ताकि आप सॉल्व कर सकें. तो मैंने प्रायोरिटी में मैथ को सबसे पहले रखा था. फिर उसके बाद मैंने इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चंस रखे थे, एंड फिर जो बाकी जो दो सेक्शन हैं उनको मैंने रख लिया था. तो दैट वर्कड फॉर मी एंड आई गॉट इन, आई गेस. तो दैट्स प्रीटी मच इट. Okay, so we found out that time management is a big problem, and time management is an issue that every student faces. So how do you tackle that? First of all, mock tests. You need to practice more and more. Tabir Academy में every question is given a timer. So जैसे ही वो time exceed होता है, you don't get any negative marking or anything. The question changes. That shows that you need to move on, and that should be your cue, and you need to understand that in real life when you have these questions and when you have these tests, you need to remember कि एक दफ़ा एक question के ऊपर 1 minute से ज़्यादा लग रहा है, move on, because you have 200 questions and you have 180 minutes, and therefore you cannot afford to lose time. Apart from that, there's courses so that you can learn time management and learn to prepare it in an easier manner. So that's it from my side. Thank you so much.